Good morning everyone and welcome to another video in which I will be explaining you the financial sector reforms under the liberalization policy of the government, the extensive liberalization policy or new economic policy which was introduced in 1991. So what were the financial sector reforms which the government has introduced, and why these and what are the benefits of these financial reforms into our economy, that we are going to discuss in this video. Now, financial sector reforms. Now what happened? See, finance, as we know, that is the backbone. Finance is the backbone of every industry, every country. यानी कि फाइनेंस के बिना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी we cannot imagine. So as we have already studied that before 1991, what was the criteria? Before 1991, it was a criteria that the condition of our economy was very pathetic. We were incurring heavy losses. Sick units was very the mounting up into our economy. Debt burden was there, fiscal deficits was there, expenditure was increasing day by day, and the revenue was not there with the government. So now what happened? So under this liberalization policy, the new tax reforms and the financial reforms were introduced by the government of India, so that to help the new entrepreneurs, new private sector people to start up their business. I hope it has been clear. So the financial sector reforms, what are these financial sector reforms? We are going to discuss about that. See, the role of RBI changed from the regulatory body to the facilitator. First, before 1991, the RBI was regulatory authority. The RBI or the central bank was regulating each and every monetary transaction which is being done into the country. Regulation was there, rules were there, restrictions were there, and it was under the eyes of RBI. RBI was monitoring each and every monetary activities here. But now in 1991 and after that, the scenario was changed completely. Now with the regulatory body, now it has changed. This RBI has changed to the facilitator. Facilitator means they are giving the facilities to the people in the terms of finance or in the terms of monetary needs, so that they can easily start up their business. They easily can do the investment for the capital generation into the country. So from the regulatory authority, now RBI has become the facilitator here, giving facilities. Facilities to whom? Facilities to the small businessmen or big also, whosoever is there into the secondary sector. So that was the first thing which was introduced in financial sector reforms. I hope it has been clear. Second, establishment of private sector banks. Private sector banks was also privatization. Some privatization of the banks was also done, and even the private entrepreneurs were given the chances to enter into the banking business. They have to take the recommendation of the RBI. They have to seek the permission, and after some formalities, they can enter into the banking business and make available the finance to the different entrepreneurs. हर एक को उन्होंने फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और असिस्टेंस देने के लिए प्राइवेट सेक्टर लोगों को इंक्रीज़ किया, उनको लाइसेंस दिया, जिससे कि वो बैंकिंग बिजनेस करके द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी है उसको लोगों तक पहुंचा सके. That was also one of the most important work done by the RBI. After that, foreign investments. Foreign investments here means अब हमें क्या चाहिए, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, तो उन फॉरेन रिजर्व्स को
इंक्रीज ऊपर लाने के लिए, उन फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करने के लिए इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इंडस्ट्रीज को कहना पड़ेगा कि भाई आओ एंड सेट अप योर बिजनेस इनटू आवर कंट्री, use our resources. In turn they will be investing into the country, into their own currency or in dollars. तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा, पैसा आएगा. अगर वो हमारी कंट्री में कोई कंपनी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. नाउ सेटिंग अप न्यू ब्रांचेस, यानी कि जो बैंक्स थी, तो नेशनलाइज बैंक थी लाइक पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये जो बहुत सारी ऐसी नेशनलाइज बैंक थी हमारे कंट्री के अंदर, तो इन बैंक्स की ब्रांचेस को रूरल एरियाज के अंदर सेटअप करने के लिए RBI ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए. आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू. Now, these were the certain financial sector reforms which was introduced in the extensive liberalization policy. Now, tax reforms or we can also say it as the fiscal reforms. जैसे अभी तक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को हम मॉनेटरी रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम टैक्स रिफॉर्म्स को हम लोग फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं. तो व्हाट वर द टैक्स रिफॉर्म्स, व्हाट वर द this financial sector reforms that we are going to discuss in this. See, reduction in direct taxes. The income tax was levied before 1991 the rate was very high. So now the reduction was done into the tax rate of whether it is direct or indirect. So first of all डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इन्होंने क्या किया, अपनी रेट्स को कम करा, टैक्स रेट्स कम करी. सेकेंड, रिफॉर्म्स ऑन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए. इनडायरेक्ट टैक्स स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आई, नए तरीके के टैक्सेस सिस्टम, एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लेके आई जो कि इजी टैक्स स्ट्रक्चर था इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब आसानी से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी समझ में आने वाला था और लोगों को नॉलेज थी कि कहाँ किस तरीके से कौन सा टैक्स लेवी किया गया है. और अभी रिसेंटली तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST को भी इंट्रोड्यूस किया गया है. वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द GST ऑल्सो इन दिस. देखिए, GST जो था वो फिस्कल रिफॉर्म्स था, डीमोनेटाइजेशन जो था वो मॉनेटरी रिफॉर्म्स था. तो हम ये दोनों भी सेपरेटली पढ़ेंगे. दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स पेइंग प्रोसीजर्स. अब बहुत टैक्स जब अपन देने जाते थे तो हमें प्रोसीजर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर्स, टैक्स प्रोसीजर्स होते थे उनसे गुजरना पड़ता था. तो अब वो जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर्स को बहुत हद तक सिंप्लीफाई किया गया. आई होप इट इज बीन क्लियर. दूसरा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो इंट्रोड्यूस किया गया. और GST को तो हम अभी यहाँ नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सटेंसिव रूप से, डीप रूट से, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर इन टू योर कोर्स. आई होप you have understood the financial sector reforms and the tax reforms under the liberalization policy of the government, 19 new economic policy, 1991. Now, in the next video, we will be talking about the foreign exchange reforms or foreign sector reforms as well as trade and investment reforms. So we will be going to study about these two types of reforms into the next video. So please see this video and try to understand the concept, plus the notes which has been given to you, please revise the notes also. I hope you are understanding the concept very clearly.